चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम एक नई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और इस प्रॉब्लम को हमें यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट के थ्रू इसको सॉल्व करना है। ओके, सो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे? सो अगेन वी आर टेकिंग द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बेसिकली इस प्रॉब्लम को लेंगे। सो दैट इज इक्वल टू लेट that determinant of A that is equal to 1 1 1 A B C and A square B square C square. Okay, we apply the property that is R2 is equal to R2 minus of R1 and R3 apply with R3 minus R1. So I'm going to apply these two invariance property, that is property number 7. invariance property का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. Okay, so that is the property of invariance. Property of invariance. Okay, so then mod of A means determinant of A, basically not mod of A, that will be the R1 is not affected, so that will be A square, rest will be 0, that will be B minus A, and that will be B square minus A square, this will be 0, this will be C minus A, and that will be C square minus A square. Okay, so नेक्स्ट हम क्या करते हैं? हम कॉमन निकाल लेते हैं इनमें से. सो दिस कैन बी रिटन एज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें से b माइनस ए कॉमन आ जाएगा, सो b माइनस a is common, and from the third row c minus a कॉमन आ जाएगा. सो ये बचेगा आपके पास में 1 a and a square, and that will be 0, that will be 1, and that will be b plus a. Okay, again 0, again 1, and that will be again c plus a. Okay, so moreover we apply again invariance property. So again apply the property number P7. So property will be that R3 minus R2. ओके, सो R3 में से R2 को मैं अप्लाई करूंगा और जो वैल्यू आएगी वो R3 में मैं स्टोर करूंगा. सो द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर विल बी स्टोर्ड इन द R3. सो द determinant of A will be B minus A and C minus A, that will be 1 0 0 again a square 1 a plus b, and that will be again 0, and that will be c plus a minus b minus a. So finally a to a cancel out, so that will be c minus b. Okay, so friend, as we know this is a triangular matrix. So again this is a triangular matrix, as you know.
the principal diagonal element. So this is a triangular matrix. So this is a case of triangular matrix. So we apply the property number 7. So that is property P, property number 8. That is a property number 8, the triangular property, triangle property. Okay. So the determinant of A will be equal to, that will be B minus A, C minus A, and that will be C minus B. So finally that will be determinant of A will be equal to A minus B and B minus C and C minus A. So that is the answer, and that we have to prove. सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। एक तो प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस का इस्तेमाल किया है और दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल किया है, और दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के बाद हमने आंसर निकाल दिया है। सो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने उसको लेट एज्यूम किया है कि डिटरमिनेंट हमारा लेट ए है। इसके बाद में हमने R2 इम्प्लाइज टू R2 माइनस R1 प्रॉपर्टी एंड R3 माइनस R1 प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है। जैसे ये दोनों में प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, देन मेरी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। डिटरमिनेंट रो वाइज जो होगा एलिमेंट वो 1 a स्क्वायर एंड R2 जो होगा वो 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड R3 विल बी c 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा। सेम एज यहाँ से हमने अलजेब्रा का इस्तेमाल किया है। सो फ्रेंड, अलजेब्रा जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बेसिक फंडामेंटल अलजेब्रा का हमने इस्तेमाल किया है। सो एज वी नो दैट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट सिंस दैट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी माइनस ए एंड बी प्लस ए। ओके, and same as c square minus a square that is again equal to c minus a and c plus a, multiply with c plus a. So we apply these two over there, है ना। so उस वजह से हमने यहाँ पे इस चीज को b minus a and c minus a को R2 एंड R3 से हमने कॉमन निकाल लिया है, एंड देन आफ्टर हमने अगेन इनवेरियंस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है R3 माइनस R2, और जिसकी वजह से ये आपकी R3 पे इसका इफेक्ट पड़ा है, और फिर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने की वजह से इसका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो मल्टीप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट होता है। सो 1 into 1 into c minus b, that is the answer, c minus b. So finally you get the answer. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ये लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ में अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल क्लास।